Good morning, all the students. Shall Good we start? morning. Class? Good morning. Today we start block 4, unit 1. This is a property. There is a property of basic graphs. Basic properties of graph. Okay, student. Anyone has idea about graph? What is a graph? Student, you have idea about graph? Hello. Students, you have idea about graph? Graph basically connected various type of nodes and its adjacent nodes and Graph is basically based on like vertex and edges. Vertex and edges. Hello. Yes, ma'am, you are yes, audible. Just only graph. We just need two things: vertex and edges. There is a vertex and edges. It's called graph. And what is a this? Example number one. Example number one is a graph. There is a two vertex x1, x2, and one edge. And there is also x1, x2, two vertex, and in between one edge. This is a graph. Example number two. Student, tell me in example number two how many vertex and edges. Student, tell Four, me. four Four vertex and four vertex edges. and four edges. Four vertex and four edges. Very good. And this one? Four vertex, three edges. Very good. And this one? Now four vertex, Four vertex three and two edges. edges. Very good. Or what is a undirected graph? There is no direction given. Hmm. Directed graph is there. There is a direction, and this is a undirected graph. Okay. Yes, ma'am. And this one is loop. Or what is a simple graph? Without loops or parallel edges. Parallel edges. This is a simple graph. जिसमें मैम सेल्फ लूप या पैरेलल एज नहीं होता है. It's called simple graph. Very good. What is a complete graph? Students, what is a complete graph? Every vertex is joined to other vertex. It's called complete graph. Very good. And what is a star topology? It's called a star topology. There is a main hub, and this main hub connected to another one. It's called a star topology. And what is a circle? This one is called circle. In circle, there is a one vertex is less, and minus one theorem is follow in circle. Okay. Student, got it all the points? Yes, ma'am. Good. And what is a complement? मैम जो एज दिया हुआ है उसके अलावा और दूसरी तरीके से ड्रॉ करते हैं तो उसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं. Okay, good. सेम वर्टेक्स यूज करके. Good.
जैसे there is a 1 2 3 4 5 vertex and 5 edges, and this is a one type of graph, but we want to change in this graph with the help of 5 vertex and 5 edges. Then we make this. But in a complement graph, vertex is the same, but edges are not equal to same edges. There is a 5 vertex, 1 2 3 4 5, and there is also 5 vertex, but there is a 5 edges. But in this complement there is just only 4 edges. Okay students. Yes, ma'am. And what is a degree and regularity and isomorphic? मैम हर वर्टेक्स पे कितने एड्स टच हो रहा है उसको डिग्री बोलता है. Very good. And vertex number 5 has how many degree? 1 2 3 4 5 5, 6 डिग्री. 1 2 3 4 5 6 7 are. 7. 7 degree. Student all have knowledge about this? Yes, ma'am. Okay, very good. And what is a regularity? You have even and odd concept. What is a even vertex? What is a odd vertex? This is a 7 vertex is called odd vertex. X5 has 7 vertex. That's why it's a odd vertex. And X4 1 2 3 4 5 6. There is a 6 vertex. It's called even vertex. मैम वो रेगुलरिटी वाला समझ में नहीं आया, आप फिर से बता दीजिए ना. Okay. वो जो एक वर्ड था. अभी रेगुलरिटी का हम नीचे पढ़ेंगे. अभी नीचे रीड करेंगे. अभी हमने जस्ट ओनली डिग्री किया है. देन रेगुलरिटी और आइसोमॉर्फिज्म भी हम नीचे रीड करेंगे वन बाय वन. There is a regularity. Read this. मैम जिस ग्राफ में डिग्री हर जगह बिल्कुल एक होगा, सेम होगा, तो उसको रेगुलर बोलेंगे ना. Hmm. We have more than one graph. Every graph has same vertex. It's called regularity. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. This is a regularity. Okay students. Students. Yes, ma'am. यस मैम. Okay, ma'am. मैम मैंने पढ़ा था कि जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर में हर हर वर्टेक्स पे दो दो एड्ज है, तो उसको रेगुलर ग्राफ बोलेंगे. मतलब रेगुलरिटी मीन्स ये होता है कि नंबर ऑफ वर्टेक्स सेम होने चाहिए और नंबर ऑफ वर्टेक्स की डिग्री मतलब एजेस भी सेम पास होने चाहिए. यस मैम. नहीं, एजेस सेम पास होना नेसेसरी नहीं है. देखो ये है, इसकी एजेस 3 पास हो रही है, बट स्टिल यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है. हाँ, सेम होनी चाहिए वर्टेक्स एंड एजेस. स्टूडेंट जैसे इस वाले ग्राफ के अंदर एक वर्टेक्स के साथ 3 एजेस हैं, सेम अनदर वन ग्राफ बना रहे हैं, उसको देख के नंबर ऑफ वर्टेक्स के साथ, जैसे इसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स 10 है, देन वी वांट नंबर ऑफ वर्टेक्स 10 in another one graph. Then we also define same edges. Just for example, in this vertex has three edges, then we also want 3 edges.
and this is called hypercube. This is a cubic form. It's called hypercube. And this is a question. We connect a four regular graph G with 12 vertices. फोर रेगुलर ग्राफ मतलब हर वर्टेक्स से फोर एजेस निकलनी चाहिए. जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ कितने हैं वर्टेक्स 12. स्टूडेंट इस क्वेश्चन को रीड करो देन इसका सॉल्यूशन मैं आपको समझाती हूँ. रीड दिस क्वेश्चन. Excuse me, ma'am. यस. Ma'am, actually, there is a mail from the that ma'am BCA न्यू के लिए काउंसलिंग सेशन है आज. एंड लिंक को मैंने ओपन किया था तो यही लिंक ओपन हुआ मीटिंग का. तो दिस इज अ काउंसलिंग सेशन और क्लास. इट्स अ क्लास. काउंसलिंग इज ऑलरेडी डन. काउंसलिंग इज ऑलरेडी डन. या. ओके. दिस इज अ क्लास ऑफ विच BCA न्यू. हाँ. नो नॉट अ BCA न्यू. इट्स अ MCA न्यू. हाँ. MCA न्यू 212. MCA न्यू 212 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स. सो मैम मैं. एमसीए ऑनलाइन का जो प्रैक्टिकल है वो भी ऑनलाइन ही होगा ना? It's depend on your study center. नहीं, it's depend on your your regional center. मैम मेरे रीजनल सेंटर में बोल रही है कि ऑनलाइन. मैंने बोला कि मैं ऑफलाइन क्लास नहीं ले सकता हूँ, मैं जॉब करता हूँ. तो उन्होंने बोला कि आपका ऑनलाइन शेड्यूल होगा तो उसी के हिसाब से करना पड़ेगा. तो मैम मैं कंफर्म नहीं हूँ कि मेरा अटेंडेंस यहाँ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि Okay, उसके बिना फिर मैं एग्ज़ाम नहीं दे firstly पाऊँगा. you tell me one thing, where you belong? मैम आई बिलोंग टू RC शिलोंग. RC? शिलोंग. और मैंने उनसे बात भी किया तो उन्होंने बोला कि हमारे पास ऑफलाइन क्लास हो रहा है अब, लेकिन ये MCA न्यू के लिए है. तो फिर मैंने बताया, मैंने अपना प्रॉब्लम कि मैं जॉब करता हूँ, मैं BSF में हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ यहाँ पे क्लास लेने के लिए. तो उन्होंने बोला कि आपका ऑनलाइन जो शेड्यूल होगा उसके अकॉर्डिंग आप क्लास लेना. अब मेरे को ये नहीं कंफर्म है कि यहाँ पे मेरा अटेंडेंस लगता है कि नहीं लगता है. स्टूडेंट थ्योरी का अटेंडेंस नहीं होता. अटेंडेंस थ्योरी का होता है. थ्योरी क्लासेस में हम जो आते हैं उसका अटेंडेंस होता है, वो थ्योरी एग्जाम के लिए होता है. बट प्रैक्टिकल का जो अटेंडेंस होता है इट्स डिपेंड ऑन प्रैक्टिकल एग्जाम. प्रैक्टिकल अटेंडेंस इज मस्ट बी नेसेसरी फॉर 75%. मैम अगला क्लास हमारा प्रैक्टिकल का ही है, तो मैं ये कंफर्म नहीं हूँ कि मेरा उसमें अटेंडेंस है या नहीं है. मैम आप नेक्स्ट क्लास का जो भी आपकी फैकल्टी होगी उनसे बात करना कि आप मेरी अटेंडेंस लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो. हाँ हाँ ठीक है मैम, थैंक यू. ठीक है एक्सक्यूज बेटा. मी मैम. वेलकम बेटा. यस. ये फर्स्ट सेमेस्टर का ही है ना MCA न्यू. MCA न्यू फर्स्ट सेमेस्टर. तो मैम क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है इसका मतलब. हाँ, क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हैं. मैम कब से स्टार्ट हो चुकी है. क्लासेस क्लासेस तो स्टार्ट हुए 2 वीक्स हो गए. मैम ईमेल पे तो मेरे को ये दिखा रहा है कि 3 मई से स्टार्ट होगी ऑफलाइन. सॉरी 3 मई से स्टार्ट होंगी. बेटा फर्स्टली डू वन थिंग. सेंड द मेल इन इग्नो. ओके मैम. Okay, then all students read this example number 6, then I will explain you. Firstly read. ओके. मैम हेलो हेलो हेलो. Yes, Bharat, you are audible. मैम
मैम जो असाइनमेंट है वो ऑनलाइन सबमिट करना है या ऑफलाइन? ऑनलाइन वालों को तो ऑनलाइन करना है, ये कंफर्म है, वही बाकी तो एमसीए न्यू का नहीं पता। एमएस पोर्टल पे सबमिट करना है असाइनमेंट। एक्चुअली एमसीए की क्लासेस कब से स्टार्ट हुई है, किसी को पता है? हाँ वो पीडीएफ एमसीए न्यू देखना भाई पड़ेगा ना। हाँ जी हाँ जी, एमसीए नहीं हो। 2 वीक्स पहले हुई है, जो आप देख रहे हो ना, 3 मई से प्रैक्टिकल है ऑफलाइन। 3 मई से प्रैक्टिकल है? हाँ, ये तो ऑनलाइन ही हुई है, ऑफलाइन नहीं हुई भाई एमसीए की। एमसीए ओडीएल अच्छा, हाँ ऑनलाइन क्लासेस ही हुई है अभी तक? हाँ, ऑनलाइन क्लासेज है, ओडीएल की जो प्रैक्टिकल्स होंगे वो ऑफलाइन होंगे। अच्छा, और 2 वीक्स हो गए मतलब, लाइक स्टार्ट हुए? हाँ टू हाँ 2 वीक्स हो गए। 12 अप्रैल से क्लासेज स्टार्ट हुई थी। फर्स्ट क्लास 12 अप्रैल को हुई थी। शेड्यूलर कल आरसी से मुझे भी रिसीव हुआ है, तो मैं आज से फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहा हूँ। 12 अप्रैल से क्लास बेसिकली स्टार्टेड है, एंड Okay, थर्ड में थर्ड में एमसीए ऑनवर्ड एमसीए प्रैक्टिकल ऑनलाइन क्लासेस हैं। एमसीए ऑनलाइन कोर्स के लिए जो प्रैक्टिकल होगा वो क्या ऑफलाइन होगा? मतलब रीजनल सेंटर पे जाने वहां से प्रैक्टिकल करना पड़ेगा? अरे पहले थ्योरी का दे लो, उसके बाद देखा जाएगा, ठीक है। अभी ओके ओके किसी को नहीं ओके पता है ना। और ओके मोस्ट ओके। प्रोबेबली ऑनलाइन ही होगा प्रैक्टिकल आपका। 5-10 मिनट का होगा लेकिन ऑनलाइन ही होगा। मैम बता ओ रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है ठीक है। लेकिन वो थियोरी एग्जाम के बाद ही वो स्केड्यूल वगैरह देंगे। हाँ तो उसके बाद जाके ऑनलाइन पे गूगल मीट पे ना आपका कंडक्ट कराया जाएगा। ओके ओके। और वाइवा भी उसी दौरान हो जाएगा। बट आरसी ओ, आरसी आरसी टू आरसी वेरी करता है, ऑफलाइन भी ले सकता है। राइट राइट। ओके। तो जो भी आगे जाके तो मिल ही जाएगा नोटिफिकेशन। students, student, your gossip is complete. Then you read this question or not? Example number 6. मैम पढ़ा है। Okay, what is the meaning of we construct a four regular graph G with 12 vertex? What is the meaning of this? मैम 4 रेगुलर ग्राफ हैं, जिनके पास हर हर ग्राफ के पास 12 वर्टेक्स है। अब उनको हमको ज्वाइन करके एक मतलब बनाना है अलग से। नो, इसका ये मतलब है एक ग्राफ है जिसके अंदर 12 वर्टेक्स है और एक वर्टेक्स के पास 4 एजेस होगी। दैट्स कॉल्ड फोर रेगुलर ग्राफ. यस मैम। Okay, this one is a solution. Read this one. A1 has four vertex 1, 2, 3, 4. A2 has also four vertex. A3 has also four vertex. Every vertex has four edges in this graph. A1 has four edges. A2 has four edges. A3 has four edges. That's why it's called four regular graph with 12 vertex. Understand all students? यस मैम। And these are another one question. Do all these question regarding to regular graph, and you have any problem then ask me tomorrow. And what is a isomorphic? Student, uh, everyone has knowledge about what is a isomorphism. Morphism.
Student, you have two graphs. One graph is a G, its vertex is B, G, E, G. E means edges. And second one graph is Z, Z or H. H, second graph is H, VH, EH. Be two graph by an isomorphism. F from the graph G to the graph H. इसका ये मतलब है कि जो फंक्शन है, there is a function between VG belongs to VH. Both the VH is fully dependent on VG. There is a function between in these two graphs, one to one or one to many. On to means, what is the meaning of on to, students? Students, what the meaning of on to? One to means one to one mapping. One to means one to one mapping. On to one to one मतलब map. हाँ, One to one means are connected to only one vertex. One to one yeah, mapping. true. And there is a xy belong to edges, or a function f function y is belong to edges of graph H. That's why it's called isomorphism. And in this case we say that G and H are isomorphic, otherwise they are called non isomorphic. Okay, student, anyone has doubt about this? What is the isomorphism? मैम मैंने जो पढ़ा है उसमें ये पढ़ा है कि नंबर ऑफ वर्टेक्स सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ एड्स सेम होना चाहिए, और नंबर ऑफ जो वर्टेक्स है वो उनकी डिग्री भी सेम होना चाहिए, और जो हर वर्टेक्स जो है वो दूसरे ग्राफ के उससे कॉरेस्पॉन्डेंस में भी होना चाहिए, तब वो आइसोमोर्फिज्म होता है। There is a lots of rule and regulation. Tell me the graph G and H is isomorphic. Graph GH or isomorphic or not? तो 3 4 5 6 मैम इसको चेक करना पड़ेगा। चेक करके आंसर बताओ फिर। मैम ये जो मैंने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्टेक्स पे यहाँ पे 4 डिग्री है और यहाँ पे 3 डिग्री है। मैम यहाँ पे जैसे हर वर्टेक्स पे यहाँ पे 4 डिग्री है और यहाँ पे इसमें 3 डिग्री है, तो मैंने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट, आपने आइसोमॉर्फिक के बहुत सारे मल्टीपल एग्जांपल्स दिए थे। जो मल्टीपल एग्जांपल थे उसमें से कोई भी एक एग्जाम मतलब जो मल्टीपल प्रॉपर्टीज थी उसमें से कोई भी एक या दो प्रॉपर्टीज फुलफिल होनी चाहिए। दैट्स व्हाई इट्स मेक द आइसोमॉर्फिक। अब ये आइसोमॉर्फिक ग्राफ है स्टूडेंट, इसको रीड करो। इसमें साफ साफ लिख रखा है इट्स अ आइसोमॉर्फिक ग्राफ। और क्यों है? क्योंकि जो वीजी है ना, वी एच जो है ना वो फुल्ली डिपेंडेंट है वीजी पे। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 there is a vertex is same in graph G and H. हाँ वर्टेक्स Student, है। same. That's why vertex is dependent on vertex of graph H dependent on vertex of graph G. Yes.
And another one example is xi is equal to a. If function xi is equal to a, function f2 is equal to b, function f3 is equal to c, and uh, then y1 is equal to d, function y2 is equal to e, function y3 is equal to z, function y4 is equal to h. इसमें शो कर रखा है यू वी बिलोंग टू ई, जी इफ एंड ओनली एफ यू हमने रीड किया था आइसोमॉर्फिक में, या तो वन टू वन प्रॉपर्टी बिलोंग करेगी या ऑन टू वन प्रॉपर्टी मीन्स होता है इफ एंड ओनली इफ। स्टूडेंट वन टू वन प्रॉपर्टी मीन्स क्या होता है? अब स्टूडेंट देखो, जो x1 है देयर आर 4 एजेस और y1 के पास तो जस्ट ओनली 3 एजेस है। स्टूडेंट्स यस मैम। यस मैम, यस मैम। हाँ, अब देखो x1 इज बिलोंग टू ए के पास कितना वर्टेक्स है? 1 2 3 4, दैट्स व्हाई x1 और a इज बिलोंग इक्वल, इक्वल वर्टेक्स, इक्वल हाँ एजेस। हाँ हाँ, Yes. इक्वल then इक्वल। b, then x2 equal to b, x2 has 4 edges and b has also 4 edges, equal. Yes. यस मैम, यस मैम, Then x3 is equal to c has 4 edges and Yes. x3 also has 3 edges, equal. यस मैम, यस मैम, Then y1 is equal to d has 3 edges and y1 is also has 3 edges. यस मैम, Then One y2 is y2 has also 3 edges, equal to e has also 3 edges, yes. यस मैम, y3 has also 3 edges, it's equal to G. g has also 3 edges, y4 has 3 edges and equal to h has also 3 edges. Yes. It's dependent on if and only if property. Yes. यस मैम, Correct. It's called isomorphic. Yes. It's isomorphic. Okay student. यस मैम। यस मैम। It's a 8 to 8 graph. Student, both are. There is a 8 vertex and there is also 8 vertex. यस मैम। 8 vertex and 8 edges. 8 means 8 vertex, 8 means 8 edges. And there are some other examples. Firstly, you read and then ask me question in tomorrow class. And what is a subgraph, student? This is a complete graph, and we divided this graph in multiple parts. It's called subgraph. Students, what's a subgraph? If we divide a graph into multiple parts, it's called subgraph. Very good. And there is another one question. Read, and this is a complete graph, and this one is a subgraph of this complete graph. Understand, students? मैम क्या? Read example number 13. Students, read example number 13.
Student, understand example number 5, 13. What is the example number 13? Student, this one graph, this is a subgraph of this graph. It's also called Peterson graph. There is a two different type of vertex name x1, x2, x3, x4, x5. y1, y2, y3, y4, y5. And this one is the Peterson graph or subgraph of this graph. Okay, students, you understand? Ma'am, this is example of subgraph. Yeah, it's also called Peterson graph. Read this. All students clear all the concept of about the subgraph and Peterson graph. X has 1 to 5 vertices name and Y has also 1 to 5. Sorry? Student, this one is a union of two graph. Student, this one is a union of two graph. There is a xi. I is belong to 1 to 5 and yz belong to j is belong to 1 to 5. Both union is called one graph, but we just only want graph number G1. G1 is a totally depend of yj. J is belong to 1 to 5. Of edges of G1 is y1 to y3, y3 to y5, and y5 to y2, y2 to y4. Student, clear? Your concept is clear? So does it mean that all subgraph are Peterson graph? Hmm. This graph called is Peterson graph. Okay, students. Yes, ma'am. Okay. Okay. Second unit is connection. सेकेंड यूनिट इज कनेक्टेडनेस. अब कनेक्टेडनेस क्या होता है इसके बारे में स्टूडेंट हम लर्न करेंगे. What is a connected graph, you student? This one is a connected graph because there is a path, circuit and cycles. ये पाथ्स है स्टूडेंट जो एजिस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ये पाथ्स है. फिर सर्किट्स भी है, इसमें साइकिल भी है. Student, read what is a walk. Student, read this. मैम, किसी भी सीक्वेंस में अगर हम बिगनिंग और एंडिंग सेम पॉइंट पे करते हैं जाके, तो वो एक वॉक होता है.
Student, what is a walk? Student, there is a lots of vertex, and in between vertex it's called edges. V0 and V1 has one edge, it's called walk. V1 or V2 has one edge, it's called E2, it's called walk. Student, understand what is a walk? Yes, ma'am. And student, what is the walk of this graph? Like x1 is a x1, then x1 to x2, then x2, then x2 to x3, then x3 to x5. This is a call walk. And read this. What is a path? Students, understand what is a path? Student, you know what is a path? मैम हम लोग इसे बोल सकते हैं सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस. Yeah, distinct means just only one, not multiple. In this graph, साइकिल just नहीं है only, मैम. yeah, vertex, and one vertex is one time is work. One edges is work one time. It's called distinct vertex and distinct edges. Path means V1 to V2, V2 to V3, V3 to V4. It's path called path. And if one edge is come like two time, and one vertex is come more than one time, it's called cycle. Okay, student, read what is a cycle. Student, read what is a cycle.
So student, you all have knowledge about what is a cycle. मैम जब कोई भी वर्टेक्स सेम वर्टेक्स से कनेक्टेड हो जहाँ पे एक साइकिल क्रिएट होता है तो उसे Hmm. हम लोग साइकिल बोलते हैं। Hmm. जैसे वन वर्टेक्स मोर देन वन टाइम यूज में आया, इट्स कॉल्ड साइकिल. Okay, concept is clear. यस मैम। And this is a example number two of closed walk, which is not a cycle. A walk which is not a path, a cycle. इसको आप read कर लेना. Whenever has you have doubt about this all, then ask me in tomorrow class, because it's so much easy. And there is a component. Re- Read what is a component and what is a null graph. Student, tell me what is a connected graph. Student, what is a connected graph? The graph is called connected if the two vertices that example says vertices Hmm. U and V. To, You can hmm. walk from U to V through any of the vertices of the graph, then it Hmm. is called a connected graph. Very good. If there is a two vertex in between one edge, it's called connected graph. And what is a disconnected graph? There is a two vertex V1 or V2. In between these two vertex, there is no edge. It's called disconnected graph. And what is a null graph? Null graph is just only simple one vertex is there, or there is no edge. It's called null graph. Okay, all Yes, ma'am. students. And what is a connectivity? Connectivity is this. This is a one graph, this is a two graph in between one edge. Between vertex D or vertex G. Vertex D or vertex E. Is there is a one edge, it's called connectivity, because two graphs is connect with one edge. And student, what is the read this? What is a bipartite graph? Read this all. There is a four
Read this one.
हेलो स्टूडेंट्स, रीड कर लिया? स्टूडेंट्स, आप सबने रीड करा या नहीं किया? Yes, ma'am. अब मुझे एक्सप्लेन करो व्हाट इज दिस। इसमें हर पर्सन को जो है वो वन से ज्यादा जॉब असाइन करना है या फिर वन जॉब असाइन। बेटा, योर वॉइस इज नॉट करेक्ट. There is some disturbance in your voice. There is, I think so, some network issue, beta. The highlighted section is talking about the work assignment problem, where four persons are there and there are four jobs. So one person can do one job or one person can do more than one job. So how this problem can be solved? This is what is asked here. Okay, very good. Everyone has understand this graph. This is a call. This is called bipartite graph. There is a x1. These has two vertexes. The vertex x1 has two edges. One edges is belong to connect to y1. Second one vertex is connect to y2, and vertex y1 connected to x1 and x2 also. Okay, student. Anyone has doubt about this graph? Student, anyone has doubt about this graph? No, No. student. Okay. Ma'am, how to revise this question or Read this one. Your concept is clear whenever you read this equation. मैम एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। Okay. Okay, there is a one graph. It's called bipartite. V VG. G is a graph and there is a vertex X union Y means X vertex and Y vertex is same and edge is also same. Like this. There is a x1, x2, x3, x4 and but there is a y1, y2, y3, y4, y5. X union Y means both are all the element of X, all the elements of Y is called vertex of G. And where X and Y are non-empty sets, X और Y empty नहीं होने चाहिए और X और Y का intersection होगा, there is called empty. Intersection is called empty. And every edge in graph G, every edge in graph G has one end vertex in the set X and the other end vertex in set Y.
The sets x and y form a partition of set Vg, and we often say the x union y. It's called bipartition of graph G. We also denote such a graph A. This one is a example of bipartite graph. Student, you have knowledge about this? Student, understand or not? Yes, understand. Okay, good. And this is example number 5 for this question. Read this, then I will explain.
स्टूडेंट आपको एग्जाम्पल नंबर 5 समझ आ गया? स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 5 समझ आ गया आप सबको? ओके स्टूडेंट, इसको आप कर लेना, अगर नहीं समझ आए तो कल पूछ लेना. Then there is a tree. Tree is a one root, two child. This is the root x1. This has two child x2, x3, x5, 5, y5 is the root of this tree. There is a child's x, y1, y2, y3, y4. And this is another one trees. There is a main root is this, and another one is a subroot, and this one is called forest. And what is a forest, student? Students, what is a forest? बहुत सारे ट्री का एक कलेक्शन को हम लोग फॉरेस्ट कह सकते हैं. Sorry, बहुत सारे ट्री जो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, उसे हम लोग फॉरेस्ट कह सकते forest कहते हैं. Very good. This is a property of tree. Read this property. Then I will explain. मैम ट्री एंड ग्राफ में डिफरेंस क्या है? Student, you have knowledge about what is a tree? It's so simple. G is a tree. G has no cycle. That's why it has n minus 1 edges. G is a connected and has n minus 1 edges. G is connected. That's why there is a edges is called bridge. And any two vertex of G are connected by exactly one path. There is a one path. There is a one path. That's why it's called tree. In tree, just only one path between two vertex. Path is called edges. Student, anyone has doubt about tree? हैं. नो. Okay. Read spanning tree. What is a spanning tree? Then I will explain you.
students, everyone has idea about what is a spanning tree. मैम एक ग्राफ से जो छोटे छोटे ट्री बनाए जा सकते हैं सब ट्री उसको हम लोग हाँ, स्पैनिंग ट्री कहते हैं मैम। very good. Firstly, one type of forest tree, and forest tree has many tree, and we want to separate all tree. It's called spanning tree. छोटे छोटे trees. It's called subgraph. Very good. This one is a tree, and this has small part of tree. It's called spanning tree. And these two graph is very important. Hamiltonian graph or Eulerian graph. It's very important topic. And read this. What is a Eulerian graph? Read this. Then I will explain you. All students, a trail is a walk. यूरेलियन ग्राफ में जो वॉक होती है उसको क्या बोलते हैं? ट्रेल. इज नोन नो एज इन रिपीटेड. दैट मीन्स क्या है? V1 V2 has just only one edge. There is no repetition. It's called trail. Is a circuit in a trail, those starting vertex and ending vertex are the same. Whenever we use looping concept, it's called circuit in Euralian graph, because in a loop is just only dependent on one vertex. One vertex is start and one vertex is starting point and same end point. Vertex start from V1 and in V2 V1. It's called loop. Loop is called circuit. Student, what is a circuit? Do you have knowledge?
Students, students, what are circuit? You have knowledge? No, ma'am. No, yeah, yes. मैम सर्किट नहीं इज मैम, थोड़ा सा सेम एज एक्सप्लेन कर दी सर्किट के साइकिल. बारे में। Loop is also called circuit, and one starting vertex and ending vertex are same. It's also called circuit. Student, starting vertex and end vertex are same. It's also called circuit. Understand the concept of circuit? यस मैम। Okay, then another one is a trail which is not a circuit. In sometime is called open trail. जिसके पास सर्किट नहीं होता उसको क्या कहते हैं? ओपन ट्रेल. And circuit in a graph G containing all the edges of G is called a Eulerian circuit. एक सर्किट है एक ग्राफ के अंदर जो कंटेनिंग कर रहा है ऑल द एजेस को, जो सारी की सारी एजेस को ले रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? यूरेनियर सर्किट या यूरेनियर ट्रेल. यूरेनियन सर्किट और यूरेनियर ट्रेल बोथ आर सेम. अ ग्राफ इज यूरेनियर इफ इज कंटेन अ यूरेनियन सर्किट. कौन सा ग्राफ यूरेनियन होता है? जिसके पास यूरेनियन सर्किट होता है. इतना समझ आ गया सबको स्टूडेंट्स? यस मैम। ओके. And there is a Hamiltonian graph. Read this. स्टूडेंट, हैमिल्टोनियन सर्किट और हैमिल्टोनियन ग्राफ क्या होता है, नॉन हैमिल्टोनियन क्या होता है, ये आपको समझ आया या नहीं आया? ऑल स्टूडेंट, you got the knowledge or not? नो मैम। There is a same whenever in the graph called cycle, it's called Hamiltonian cycle. Read, a cycle C in a graph G is called Hamiltonian cycle if it contain all the vertex of G. अगर वो सारी की सारी वर्टेक्स को कंटेन कर रहा है ग्राफ G की, इट्स कॉल्ड हैमिल्टोनियन साइकिल. ए ग्राफ is called Hamiltonian if it contain a Hamiltonian cycle. अगर किसी भी ग्राफ के अंदर Hamiltonian cycle आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे? Hamiltonian graph. A graph is called non-Hamiltonian if it is not Hamiltonian cycle. अगर किसी भी ग्राफ के अंदर Hamiltonian cycle नहीं है तो वो Hamiltonian graph नहीं होगा. ये सारा हैमिल्टोनियन है. देखो सारी वर्टेक्स, ये वर्टेक्स दोबारा रिपीट हो रही है, ये वर्टेक्स भी रिपीट हो रही है, ये भी रिपीट हो रही है, ये भी रिपीट हो रही है. दीज ऑल आर हैमिल्टोनियन बिकॉज देयर इज अ साइकिल अबाउट in between the vertex. Student,
समझ आया Yes, हैमिल्टनियन? ma'am. ठीक है, वेरी गुड. And there are lots of question about this Hamiltonian graph. Read all question. If you have any doubt, then ask me. What is a traveling salesman problem? Student, what is a traveling salesman problem? Another one topic is traveling salesman problem. Student, what is a traveling salesman problem? Anyone has idea about what is a traveling salesman problem? Read this. Student, what is a traveling salesman problem? इसमें बहुत सारे वर्टेक्स जो कनेक्टेड होते हैं उसमें से हमें शॉर्टेस्ट रूट को फाइंड करना होता है, बट कंडीशन ये होता है कि उसी टाइम में हमें सारे वर्टेक्स को मतलब रीच करना होता है. ठीक है, very good. Traveling salesman problem has one salesman has lots of city and town. He want to Visit. visit all the cities and all the towns. That's why he want shortest pass. At least one time. Is right, ma'am? Yeah, yeah, at least one time. Very good. And what is a weighted graph? Weighted graph is this. There is a timing. This one is a weighted graph. This a weighted graph is a pair of GF. G is a graph, F means function, where G is the graph and F is a real value function on the set EG. G means edges. Graph G has edges, and there is a value. It's called weighted graph. And what is the let's V be a walk in a weighted graph G by the weight of the walk W. We mean the sum of the weights of all the edges. Whenever we use weighted graph, this is called weighted graph. There is a value. Student, these all are weighted graph. These all edges has value. That's why it's called weighted graph. Student, what is a weighted graph? मैम अगर हम दो वर्टेक्स के बीच में मतलब डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो उसको कोई भी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हो तो उसे हम लोग ये वेटेड ग्राफ कहते हैं. ये हो सकता है मैम, टाइम हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. वेरी गुड. जैसे ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो वो अपना टाइम बचाता है ना, तो उसके लिए वो शॉर्टेज पाथ देखता है ना. शॉर्टेज पाथ देखने के लिए उसे वेट मतलब किलोमीटर और टाइम को देखना पड़ता है ना. तो वेटेड ग्राफ मतलब कि हम सबसे छोटे पाथ से कहाँ से जाएं, कि हम सब जगह सारे टाउन घूम ले, सारी सिटीज घूम ले. इसमें शॉर्टेस्ट टाइम और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं इससे. हाँ, शॉर्टेज डिफरेंस निकालते हैं. वेरी गुड. these all are the these all are weighted graph. This is a coloring of graph. It's very important topic, college students. This is a very important topic. Coloring of graph.
There is a three vertex x1, x2, x3. R means red color, B मतलब blue color, G मतलब green color. Read this. Read this, student. Vertex coloring. Student, what is a vertex coloring? मैम कोई भी ग्राफ को हम कलरिंग ग्राफ तभी बोल सकते हैं जब कोई भी दो एडजेसेंट वर्टिसेस जो होता है उसका सेम कलर से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। Okay, very good. If two vertex have same color, what is the what is it's called? K vertex coloring. If more than one vertex has same color, it's called K vertex coloring. और मिनिमम जो कलर हम यूज करते हैं ग्राफ को कलर करने के लिए, वर्टेक्स को कलर करने के लिए, उसे क्या करते हैं? वर्टेक्स क्रोमैटिक, जिसको यूजली डिनोट किससे किया जाता है? कैपिटल एक्स और जी. जी मीन्स ग्राफ, कैपिटल एक्स मीन्स वर्टेक्स. और के क्रोमैटिक को हम के कलरिंग भी कहते हैं. के मतलब मिनिमम कलर यूज किया जाता है. देयर इज अ कलर
The graph figure G with the minimum possibility of color also find the chromatic numbers of colors. There is a V1, V2. Both has different color. There is a 1, there is a 2. But still V1, V2 and V3. Same age. There is a two vertex V1, V2 and both the two vertex is connected with one edge. That's why its color is different. V1 का कलर दूसरा है, V2 का कलर दूसरा है. स्टूडेंट जब भी दो वर्टेक्स एज एज के साथ कनेक्टेड होएगी तो उनका कलर डिफरेंट होना चाहिए, सेम कलर नहीं होना चाहिए. जैसे V1 का डिफरेंट कलर है, V2 का डिफरेंट कलर है, बट स्टिल V1 और V3 का सेम कलर है. क्यों? क्योंकि वहां पे कोई वर्टेक्स ऐड नहीं है इन बिटवीन. समझ आ गया कलरिंग ऑफ ग्राफ स्टूडेंट्स? And like this graph D, V1 this vertex has one color, this vertex has five color, this vertex has three color because it's not connected, it's connected with each other with the help of edge. Example number 5 3 एग्जाम्पल नंबर 3 विदाउट कलरिंग और विद कलरिंग. हमने इसमें कलर कितने यूज किए हैं? 4. बिकॉज x1 connected with x3, x1 with connected with edge x2. That's why x1 has different color, x3 has x5 has different color, x2 has different color. But x1 is not connected to y1. That's why there is a same color 1 1 in between. स्टूडेंट जब दो वर्टेक्स के बीच में एक एज होएगी तो उन दोनों का डिफरेंट कलर होगा. दो वर्टेक्स के बीच में एक एज नहीं हुई तब उनका कलर सेम हो सकता है. ये कंसेप्ट आप सबको समझ आ गया? स्टूडेंट सॉरी, अभी स्टूडेंट V5 और V6 के बीच इन बिटवीन एज नहीं है ना, तो इन दोनों का सेम कलर हो सकता है. बट स्टिल V5 के V1 से कनेक्टेड है और V5 V7 से कनेक्टेड है, तो इन दोनों का सेम कलर नहीं हो सकता. इन तीनों का V5, V1 और V7 का सेम कलर नहीं हो सकता. ये चीज समझ आ गई स्टूडेंट्स? यस मैम. ओके, अब एज कलरिंग पढ़ेंगे. इसे रीड करो. सेम वही है जो वर्टेक्स क्रोमेटिक का था, वही एज का आएगा. रीड करो इसको. स्टूडेंट एजिस कलरिंग क्या होता है समझ आ गया? सेम होता है
वर्टेक्स कलरिंग की तरह। इसमें भी मिनिमम कलर यूज करेंगे तब हम बोलेंगे क्रोमेटिक एजेस, और जो कलर्स होते हैं उनको बोलेंगे के एज कलरिंग। समझ आ गया स्टूडेंट, व्हाट इज द एज कलरिंग? स्टूडेंट स्टूडेंट्स एज कलरिंग समझ आए या नहीं आया? यस मैम। देयर इज अ color between edges. Two vertex has one edge. There is a color number 1, color number 2, color number 3, and there is also process. And there has another one trick. This vertex and this vertex has one edge. That's why there is a one color. This vertex is connected to this one edge. That's why this edge color is not same. स्टूडेंट, दो वर्टेक्स के बीच में एक एज होती है, फिर वही वर्टेक्स दूसरी एज से कनेक्टेड है, तो उन दोनों के बीच में सेम कलर नहीं हो सकता। अब देखो, ये वाला वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स के बीच में एक एज है, बट ये वाला वर्टेक्स इस वाली वर्टेक्स से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए इस एज का कलर दूसरा है। ये समझ आ गया स्टूडेंट आपको? हाँ मैम। स्टूडेंट ओके, वेरी गुड। अब there is a planar graph. What is a planar graph? This is a planar. इसको रीड करो, what is a planar graph? स्टूडेंट व्हाट इज अ प्लेन ग्राफ? आपको समझ आ गया? स्टूडेंट व्हाट इज अ प्लेन ग्राफ? It's basically a three-dimensional object या ट्रू। which we are representing on a paper through a graph. ओके, वेरी गुड। It's not crossing the any edge. There is a V1, V4, V3, V4. In V1, V2 there has one edge. V3, V2 has one edge. V3, V4 has one edge. V4, V1 has another one edge. V3, V1 has another one edge. But still V4, V2 edge not crossing the edge of V3 vertex V1, V3. That's why it's called planar graph. सर V1 is common vertex, common Yeah, point. yeah. Point. There is no crossing between any graph. Yes. Crossing is not called planar graph. Yes. What is a map coloring problem? There is a map coloring. You know the map coloring. Whenever India has coronavirus, there is a map coloring: green, red, yellow. In coronavirus time, there is a coloring of map. You know the Yeah, students? Student, you have knowledge about the coloring of map. yes, to highlight a particular reason with a different Hmm. attributes of that reason. Hmm. That's why it's called coloring of the graph. मैप कलरिंग समझ आ गया स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स मैप कलरिंग समझ आ गया आप सबको?
स्टूडेंट्स, मैप कलरिंग समझ आ गया आप सबको? Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। ओके स्टूडेंट, हमारे ये वाला ब्लॉक भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा ब्लॉक नंबर 3 लेफ्ट है। मैम ये असाइनमेंट कैसे सबमिट करना है, मतलब ऑनलाइन या ऑफलाइन? सॉरी, असाइनमेंट्स कैसे सबमिट करना है? बेटा आप कौन से सेंटर से बिलोंग करते हो? रीजनल सेंटर कौन सा है बेटा आपका? दिल्ली का या दिल्ली से कहीं और बाहर का है? नो मैम, दिल्ली का ही है। दिल्ली RC1। हेलो, दिल्ली RC1। यस मैम। दिल्ली RC1 के ऑनलाइन सबमिट होंगे असाइनमेंट्स। मैम जो पोर्टल पे T25 जून करके है उस लिंक पे। सॉरी बेटा, पोर्टल पे वो जो लिंक है तो उसपे जो T25 जून करके है वो वाला लिंक। बेटा इसका आइडिया, इस चीज का भी मेरे को इतना आइडिया नहीं है। आप मैरिट इंस्टीट्यूट की साइट पे जाना, वहाँ पे आपको मैरिट इंस्टीट्यूट का कांटेक्ट नंबर मिलेगा, उस पर कॉल करके पूछना बेटा। लिख लो मैरिट, MERIT, MERIT, मैरिट इंस्टीट्यूट। उसकी साइट पे जाना, वहाँ पे आपको एक फोन नंबर मिलेगा, उस फोन पे कॉल करके पूछना आप। ओके स्टूडेंट? ओके मैम, स्टूडेंट, थैंक यू। ब्लॉक नंबर 3 का फर्स्ट यूनिट है कॉम्बिनेटर्स। अब ये वाला हम करते हैं। वी हैव जस्ट ओनली 10 minutes। What is a multiplication and addition principle? Student, what is a multiplication and addition principle? Read this word. Suppose we want to choose two persons from a party consisting of 35 members as president and vice president. In how many ways can we this be done? We want only two person in 35 members party. One person is president, another one is the vice president. How we solve this problem? ओके स्टूडेंट, हम वाइस प्रेसिडेंट कितने वे से सर्च कर सकते हैं? मैम 35 वेज पे। हाँ, प्रेसिडेंट हम 35 वे से सर्च कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रेसिडेंट निकालने के लिए वी हैव 35 मेंबर्स। एक निकल जाएगा तो देन 34 बचे। 34 में से हम वाइस प्रेसिडेंट निकालेंगे। जब हम 35 और 34 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? वो हमारी चॉइस होएगी कि कैसे हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट निकालेंगे 35 मेंबर्स में से। इतनी नंबर ऑफ चॉइस होएगी। दिस वन इज द सॉल्यूशन। ये समझ आ गया सबको? स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 1 इज क्लियर? यस मैम। Very good. And this is another one example. Example number 2. Read. There are the political parties P1, P2 and P3. The parties P1 has 4 member, P2 has 5 member, P3 has 6 members in a assembly. Suppose we want to select two person both from the same party to becomes president and vice president. In how many ways can we this be done? First one is 4. 4 में से हम 4 टाइप से प्रेसिडेंट निकाल सकते हैं, और 4 में से एक माइनस हो जाएगा प्रेसिडेंट के लिए, तो 3 वेज से हम वाइस प्रेसिडेंट निकाल सकते हैं। ये इसका आंसर हो गया 12 वेज। सेकंड वन हैज 5 मेंबर्स। 5 वे से हम प्रेसिडेंट निकाल सकते हैं, और 5 में से एक कम करके 4 वे से हम
वाइस प्रेसिडेंट निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया 20 एंड अनदर वन इज 6। P3 इज 6 मेंबर। हम 6 वे से प्रेसिडेंट निकाल सकते हैं और 5 वे से हम वाइस प्रेसिडेंट निकाल सकते हैं। टोटल करने में 30 आएगा। इन सबको हम टोटलिंग कर देंगे। दिस इज कॉल्ड 62। इट्स कॉल्ड ऑल टाइप की पार्टीज P1 P2 एंड P3 में से हम कितने नंबर ऑफ टाइम हम उसको ट्राई करेंगे प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट निकालने के लिए। ये समझ आ गया स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रमोटेशन आता है सबको, क्या होता है? So above problem can be solved through the permutation, right? Yeah, very good, very good. There is a formula of permutation P n dot comma r. N is n factorial divided by n minus r factorial. It's called permutation. P is a 15, r is 3. 15 factorial divided by p minus 3. P minus 3 is a 12 factorial. Then reduce 15 factorial means 12 till the 12. 12 into 14 into 13 and 12 factorial about divide by 12 factorial is remove. Then we have the answer of 12, 15 into 14 into 13. स्टूडेंट परमुटेशन आते हैं सबको? ऑल हैव नॉलेज अबाउट परमुटेशन? स्टूडेंट्स परमुटेशन आता है क्या आप सबको? I know, ma'am. Okay, very good. Yes, I know. Very good, very good. And what is a circular permutation? And read the example number 3 for circular permutation. Read this one. In how many distinct way is it possible to sit 8 person in a round chair? Round chair means circular permutation. In there is a round chair. In round chair is a for 8 person sitting arrangement. But in a round chair there is a 1 minus. 8 minus 1 is called 7. स्टूडेंट राउंड चेयर में अगर 8 की सीटिंग्स 8 को बिठाना है तो राउंड चेयर में 8 चेयर की जगह हमारे पास कितनी चेयर्स होती है? वी हैव जस्ट ओनली 7 चेयर्स बिकॉज 1 चेयर इज रिपीटेड. दैट्स व्हाई वी यूज 8 minus 1 7. स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 3 सबको समझ आ गया? Yes, ma'am. Very good. And these are all examples of this particular topic. Read this all example. If you have any problem then ask me another one class. And what is a combination? Student, you all have knowledge about combinations? Yes, ma'am. Very good. There is a formula about combinations. Cn comma r equivalent n factorial about n factorial divided by n minus r factorial or r factorial. And there is a solution about this one question. Theorem number 3. We can very quickly find out for this instance how many ways there are of choosing 2 rooms out of 20 rooms. So 20 rooms is a n, 2 is a r. 20 factorial divide by n minus r. N is a 20 minus 2. It's called 18 factorial. Then 2 factorial multiplication. And जब हम 20 into 19 into 18 factorial आएगा then हमारा क्या होगा? 18 factorial कट हो जाएंगे then हमारे पास बचेगा 20 into 19 factorial.
और 2 फैक्टोरियल को एक्सटेंड करेंगे तो 2 इंटू 1 होएगा, जिससे हम 2 से हम डिवाइड करेंगे 20 को तो 10 आएगा। देन आंसर इज 190। कंसेप्ट इज क्लियर स्टूडेंट? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। या इसमें अनदर वन क्वेश्चंस भी है कॉम्बिनेशंस के, देन आप सब ये कर लेना। एंड व्हाट इज अ कॉम्बिनेटोरियल प्रॉब्लम्स? इसमें भी सेम वही है स्टूडेंट जो अभी हमने किया था। प्लीज इसको कर लेना आप सब एक बार। और एग्जाम्पल नंबर 14, प्लीज रीड एग्जाम्पल नंबर 14। A die is a roll once. What are the probabilities of the following events? Getting an even number. Even number कैसे आएगा एक डाई में से? इवन नंबर हमें निकालना कैसे पड़ेगा एक डाई में से? 2 4 6 इज अ इवन नंबर स्टूडेंट। LSG। देन गेटिंग अ लिस्ट 2। लिस्ट 2 मीन्स क्या होता है? कम से कम 2। स्टूडेंट लिस्ट 2 में क्या होता है? कम से कम 2। और गेटिंग अ मोस्ट 2, ज्यादा से ज्यादा 2। गेटिंग अ लिस्ट 10, लिस्ट 10 तो निकल ही नहीं सकती, कम से कम 10, तो इसलिए एम्प्टी हो जाएगा। अब इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करेंगे? गेटिंग अ लिस्ट 2 मतलब कम से कम 2, तो ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं? तो बी हैज 1 2 3 4 5 6, तो ये ज्यादा से ज्यादा हो गए 2 से। गेटिंग अ मोस्ट 2 मतलब कम से कम 2, तो 1 2 2 हो गए। गेटिंग अ लिस्ट 10, 10 तो आ ही नहीं सकता एक डाई के अंदर, इसलिए ये एम्प्टी हो गया। अब इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? पी ए 3 अपॉन में 6 इन अ डाई देयर इज अ 6 नंबर 3 डिवाइड बाय 6, 3 इज अ इवन नंबर। 3 को अगर डिवाइड कर देंगे 6 से तो हमारे पास गेटिंग अ इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। फिर प्रोबेबिलिटी 2 में क्या होता है? गेटिंग एटलीस्ट 2 मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 से होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? 5 को रिमूव कर देंगे तो 5 अपॉन 5 को रिमूव करने के बाद हमारे पास टोटल एलिमेंट कितने बचे? 5। 5 डिवाइड बाय 6 क्या हो जाएगा? एटलीस्ट 2 की प्रॉपर्टी। देन सी है मोस्ट 2। मोस्ट 2 के लिए मतलब कम से कम 2 होने चाहिए, कम से कम 1 या 2 होना चाहिए। तो उसके लिए क्या आएगा? 2 डिवाइड बाय 6 इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2। और गेटिंग एटलीस्ट 10, 10 तो उसमें आ ही नहीं सकता, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? नन। नन का क्या आएगा? 0। ये समझ आ गई स्टूडेंट आप सबको? स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया? वेरी गुड। अब ये यूनिट भी हमारी ओवर हो गई। ब्लॉक नंबर 3 की फर्स्ट यूनिट स्टूडेंट हमारी ओवर हो गई। हाँ, वी हैव जस्ट ओनली 3 यूनिट लेफ्ट। ब्लॉक नंबर 3 का यूनिट नंबर 2, ब्लॉक नंबर 3 का यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4। We have just only left 3 units of block 3. All the syllabus is over. If you have any doubt, then firstly ask me tomorrow class. If you don't have any doubt, we will continue. मैम Okay, student? एक डाउट है, असाइनमेंट से रिलेटेड है मैम, पूछ लूं? किससे? यस पूछिए। हाँ मैम, जो असाइनमेंट के पेजेस है वो लाइनिंग वाले होने चाहिए क्या मैम? प्लेन पेजेस पे भी दे सकते हैं मैम? प्लेन में भी लिख सकते हो, बट हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर हैंड राइटिंग अच्छी नहीं हुई ना